has entered means ki program has started. 3:30 बजे तो मेरा भी था ना एक. Gupta ji, we Sir, welcome namaskar. JC Gupta sir also. Always nice to see you. Yes sir. Sir, it's player. Same here. Yes, sir. Sir, 3:30 बजे मेरा भी था ना एक presentation. हाँ सर आपका भी है. So we can start the presentation with Gupta sir or Desai sir. You want to start? Limitation ये है जैसे मैंने बताया. जी 4 बजे आपको जाना है. I have a conference going on in the afternoon. Yeah. And I have a session to chair there from 4 o'clock. Okay, so you can start. हाँ, मैं बल्कि आप सबसे I will take leave at 4 or 5 minutes to 4. Yes, sir. You and Gupta ji and every Manovikas and all the participants will please forgive me. जी. Double booking हो जाती है यार. We welcome Bhushan Punani sir also, and he is here now. This is always pleasure sir. और मैं तो कहूँगा कि आपका Bhushan Punani sir, it was most awaited welcome here in Manovikas. आपका आना बहुत बरसों से बाकी था कि आप मनोविकास में आए, but virtually you came. So thank you very much sir for joining us. Thank you very much. Bhushan Punani sir, namaskar. Namaskar. How are you, sir? Yeah. कैसे भाई? पुनानी साहब. How are you, sir? मजामा? बिल्कुल मजामा सर. आप केम छो? बहुत सरस. बस चालेज साहब. Long time. Yes. Yes. Nice to see you all. Yeah, thank you all. Thank you. Yes, sir. नमस्कार भूषण जी. नमस्कार जी. How are you, sir? I am fine, sir. कैसे हैं? हाँ जी sir. Nice to see you. Yeah, so now I would like to go directly to Dr. Desai sir, and we can start the valedictory session. Thanks, Alok. Honestly, like you said, to have Mr. Punani, Bhushan Punani with us at any Manovikas event is a huge privilege. Yes. I must say that I did my boarding school, but after that did my young age medicine and psychiatry in Ahmedabad, and in the school period also vacations were in Ahmedabad. And we used to live in the area where I think Punani Sahab ki one of the karma bhumis is that. I mean, subsequently he grew to national and international contributions. But my childhood exposure to issues of disability was through the institutions that Mr. Punani, far ahead of his time, actually set up and managed. And so I have a very childhood-like huge, great respect for what Mr. Punani has done and the entire organization has done. In subsequent years, this century, I have had the occasion to sit across in groups with Mr. Punani across tables, and I'm always in awe of this man. Mr. Bhushan Punani is my childhood admiration still remains, be sure. Thank you, sir. Thank you. You were a great boss. And really, very best. I wish we could say much more, and I'm sure we will. Inshallah, we will meet soon. आलोक और गुप्ता जी और बाकी मनोविकास फैमिली के लिए जितना कहा जाए, आई एम श्योर वी विल ऑल एग्री, इज नॉट इनफ. Alok and Indira and the rest of the Manovikas team with Gupta ji's great support has done this wonderful job again for these 3 days. I was lucky to be at the start on day 1. I was lucky to be with you yesterday. And I keep reminding myself that as compared to all the other multifarious activities of Manovikas, here you're focusing mainly on higher education and inclusive learning. And so I'll try and cover that today. But I can't help talk more about generic, larger issues that may become applicable to the topic at hand. And Gupta ji, of course, is एक सागर है विजडम का और समझदारी का और पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस का. तो जैसे गुप्ता जी, एज आई एम गेटिंग टू नो मोर एंड मोर हर साल, हर गुजरते हुए साल के साथ गुप्ता जी मेरी जो इज्जत है आपके लिए, जो मान है, वो और बढ़ता जा रहा है. धन्यवाद. You are truly a wonderful human being and a great help to Manovikas and entire Divyangjan movement.
मैं शुरू करना चाहूंगा, मुझे विचार आ रहा था सुबह से, वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स और गर्ल्स इज बाय निदा फाजली, और उसके छह अंतरों की वो गजल है। जो बात हो रही है शेयरिंग की, जहां तक मैं समझाऊं, दी थिंग दैट आलोक वुड लाइक मी टू टॉक अबाउट is really depicted, I think, in the 21st century world, in India much more than the world, and unfortunately across the world in 2020. 2020 के इस साल ने इस डिस्क्रिप्शन को इतना सच कर दिया है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, भाइयों का शिकार आदमी। लोनलीनेस, अकेलापन is one of the biggest problems that contemporary human existence seems to bestow on us. Of course, I must say hurriedly, and I hasten to add that I believe individually, professionally, I might even say personally, and I differentiate between personal self and individual professional self. I believe at all levels of my existence that it depends on the individual, people around, and the society at large to see if more people can convert the loneliness to solitude. अकेलेपन को अगर हम एकांत के अनुभव में बदल पाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो एक अलग लेवल की बात है। हमारे दिव्यांगजन भी, मुझे विश्वास है, अक्सर वो कर पाते हैं, हमें समझ ना आए शायद, लेकिन जो हायर एजुकेशन की और दिव्यांगजन की और उनके परिवार की समस्याओं की और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात है, वहां पे मुझे लगता है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना पहला जरूरी है कि हमेशा से रहा है शायद ये मुद्दा, लेकिन मौजूदा जीवन शैली में बहुत ही महत्व का मुद्दा हो गया अकेलापन। थोड़ा सा मॉर्बिड है, लेकिन उस गजल का जो आखिरी शेर है वो भी बहुत अच्छा मुझे लगता है। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। तो कुछ हद तक हम रिकॉग्नाइज करें कि many human beings at many points of time in life go through periods of loneliness, periods of isolation, and periods of distress related to that. And मुझे इसलिए सुबह से याद आ रहा है, जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी सेशन के बारे में, सुबह से जो सोच रहा हूँ, चूंकि वो एक सच्चाई है मानव जीवन की, because that's one of the realities of unfortunate realities of human existence, and it's only getting worse. I think the importance of sharing becomes that much more important. अकेलेपन का अगर कोई इलाज है, कोई हल है, तो मुझे लगता है वो है शेयरिंग से। To me, sharing and caring will always go together, but I'll come to that in a minute. शेयरिंग की दूसरी बात मुझे ये आती है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अलग अलग भाषाओं में हमारे भारतवर्ष में, and my friends from South India will realize based on yesterday's experience I am trying to combine both Hindi and English. सुख शेयर करने से दुगना होता है और दुख शेयर करने से आधा हो जाता है। I am at a bit of a loss for translating the word sukh to English. With all respect to all languages, I don't think English has the richness that and the depth that our languages have. तो मैं दूसरा जो विचार सुबह से अपने आप में घोल रहा हूँ वो ये है कि सुख शब्द का भाषांतर क्या करूं मैं? How do I translate sukh to English? It's difficult. It's not only happiness. It's not the same as well-being. But I guess it's a bit of that and much more. But be that as it may, positive state of mind can only get doubled or trebled by sharing. And the distress or the sadness or the isolation and all of that spectrum gets only halved and reduced further by sharing. And so
Having flagged that, I'll come to what Alok was highlighting just in the end of the previous session, what Alok and Gupta ji were trying to say about Indian socio-cultural strengths. But to go on from there to sharing and caring, to me, sharing and caring are two sides of the same coin. एक ही सिक्के के हैं जिनको अलग थलग किया नहीं जा सकता और न किया जाएगा, चाहे हमें एहसास हो या ना हो. But sharing and caring actually go so well together. One might share and not even realize that one is conveying care or receiving care. One might care without concrete realization or awareness कि sharing भी हो रही है. तो हम ये समझें कि the two phenomena of sharing and caring actually are so inseparable and will go together. And so as per the situation, as per the personal comfort, as per the requirement, doesn't matter too much what is more clearly emphasized. यहाँ मुझे एक चीज हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, विश्व भर में भाषाओं में जो समांतरता है. मैं अक्सर ये सोचता हूं कि फारसी या पर्शियन खैर शब्द है और अंग्रेजी में जो केयर शब्द है, ये कैसे सिमिलर है. बट माय पॉइंट देयर इज दैट at least in the traditional old world society, and I think even till now, care has always been one important component. It's spontaneously humane, and I would say a step further, it's spontaneously a characteristic of animal kingdom at least. We don't know too well about plant kingdom, but animal kingdom, caring is innate. Caring एक बहुत सहज अंदरूनी भावना या जरूरत या फीलिंग है. People like Freud did not help very much this positive thought process and their negative theories of psychoanalysis, where ये माना जाता था कि basic human instincts सारी negative हैं और self destructive हैं, जो मैं पूरी के साथ अस्वीकार करता रहा हूं बड़े सालों से, दशकों से. So my fourth point is that caring comes very naturally. What has happened in human history, and my fifth point is, what has happened in human history is that we have knowingly or unknowingly created a lot of blocks and impediments and obstacles to spontaneous caring and sharing. मानव जाति के इतिहास में मोटे तौर पे बड़े लेवल पे परिपेक्ष में, और दिव्यांगजन की बात करें तो मानव जाति ने जाने अनजाने में वो ऑब्स्टेकल्स, वो बाधाएं, वो ब्लॉक्स खड़े किए हैं, रोड ब्लॉक्स, की कैरिंग और शेयरिंग लिमिटेड हो जाती है या झिझक के साथ होती है या बिल्कुल नहीं होती है. आई वांट टू रिपीट व्हाट आई सेड अर्लियर. मानव जाति में और मुझे लगता है सारी प्राणी जाति में, to share and to care is very innate. So you don't really need to build that. We need to work on it in the current human time because हम लोगों ने वो problems खड़ी कर दी जिसके कारण sharing और caring spontaneously हो नहीं पाती है. तो इसलिए हमें वो obstacles पहचानने पड़ेंगे, खासकर दिव्यांगजन की और दिव्यांगजन के बारे में, education और higher education के बारे में क्या बाधाएं हैं. What are those man-made blocks and obstacles that actually compromise spontaneous caring and sharing? And there, I must say, my next point, I think seventh in the line, is that amongst these obstacles and the blocks that we have created, जो अभी गुप्ता जी बहुत अच्छे से कह रहे थे, एक तो कंपैरिजन के बाद आ गई कंपटीशन, and excessive competition which obviously becomes unhealthy. तो जब हम लोग ये सोचने लगते हैं सर्वश्रेष्ठ हूं, I am the best and others are not as good as me, वहां सबसे बड़ा ब्लॉक आ जाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में या ग्रुप टू ग्रुप में भी. कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम
is all a result of that. But दिव्यांगजन और स्पेशल एबिलिटीज के बच्चे और किशोरों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो जो क्लासिफिकेशन है वो इतना हाइपर शेड में हो गया, नॉर्मल वर्सेस दी अदर्स। और बहुत सारे क्षेत्रों में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकलांगता और दिव्यांगजन के क्षेत्र में, बहुत सारे और क्षेत्रों में, कास्ट क्लास में हम ये देख चुके हैं। तो हमें सबसे पहले जो कानून अब जबरन हमें फोर्स कर रहा है स्वीकार करने कि सब मानव एक लेवल के हैं, एक प्रकार के हैं, सबको एक समान हक होना चाहिए, वो उतना जरूरी नहीं होना चाहिए कानून के लिए फोर्स करना, अगर हम हमारी स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्ट्स को खुलापन दें। जाहिर है दी like or the not like or the less like or more like amongst few people will always be there. प्राणियों में, हम मनुष्यों में, भाई कोई हमें ज्यादा पसंद आता है, किसी के साथ हम ज्यादा समय बिताएंगे, किसी के साथ और प्यार से बात करेंगे, शेयर केयर करेंगे, किसी और के साथ कम करेंगे। लेकिन उसको क्लासिफिकेशन में बदल देना और डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन की हद तक जाने देना, ये मानव जाति की उपज है। This is what we have created, and so we need to now become aware of how to overcome that. And so the inherent tendency to compare, to compete, and to excel. दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि मानव जाति का विकास और मानव जाति का थोड़े से हेजिटेशन के साथ कहा जाए सुख, जो भी मानव जाति ने पाया है, सुख या शांति, लेकिन विकास यकीनन इसलिए हासिल हो पाया है कि कंपटीशन को और एक्सेलेंस को एनकरेज किया गया। तो श्रेष्ठतम होना और श्रेष्ठता को बढ़ावा देना मानव जाति के लिए अच्छा रहा है। लेकिन उस दौरान कहीं हम लोग ये भूल गए या ओवरलुक कर गए that while competing fiercely, while having the need to excel and to do better than others, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा उन व्यक्तियों पर जिनकी एबिलिटीज अलग हो या कम हो। तो ये हमें अपने आप को दोहराना पड़ेगा। पहले हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठे, तो हमारे शब्दों में, हमारे बोलचाल में, हमारे बर्ताव में, वो हमारे छात्रों तक, हमारे दिव्यांगजन भाइयों बहनों तक, बच्चों तक पहुंचेगी। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर जो मैंने ऐतिहासिक थोड़ा परिप्रेक्ष्य दिया, वो अगर मानव जाति का बनाया हुआ एक ढांचा है, तो जो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी भी लेवल पे बच्चे या उनके माँ बाप अगर उसमें रोड़े डालते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कम से कम पिछले कुछ दशकों में, सदियों में मानव जाति ने सोच ये बना लिया। तो वो माँ बाप, जो हम बात कर रहे थे मैडम जयंती पुजारी के सेशन में और जो सवाल था, तो हमें जैसे आई थिंक मैडम जयंती पुजारी कह रही थी, हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर वो दूसरे बच्चे नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं या डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन करते हैं और माँ बाप ऑब्जेक्ट करते हैं, तो हमें उनको समझना पड़ेगा। पहले हमें उनको समझना पड़ेगा, तब जाके हम शायद उनको समझा पाएंगे या उनके साथ वार्तालाप कर पाएंगे कि उनके जो एटीट्यूड या उनकी जो सोच है वो क्यों मुनासिब नहीं है। तो जो बातें मैं आज अभी कर रहा हूँ वो एक या दूसरे प्रकार में, इन वन और द अदर मैनर, we'll have to imbibe the idea first, to respect those who feel uncomfortable for where they are coming from, and 3, understand where they are coming from individually or subculture or cultures mein, and only then be able to have a dialogue with them as to why in the contemporary inclusive thought process of human race, what they are feeling and behaving and showing as their attitude is not appropriate. Mind you, I am avoiding the word good or bad. मैं अच्छा या बुरा नहीं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, न भावार्थ है।
बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात एप्रोप्रिएटली कि मुनासिब है या गैर मुनासिब है। और उसमें जैसे हमने शायद कल भी बात की थी, वो कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, दैट वी आर ऑल ऑन ए स्पेक्ट्रम ऑफ एबिलिटी टू लैक ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी। आलोक से मैं शेयर किया था, शायद वो वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। 2 और 3 तारीख को एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नेशनल एबिलिटी समिट। तो कोशिश यहाँ ये है 2 दिनों में कि बात की जाए एबिलिटीज की रादर देन डिसेबिलिटी की या इवन स्पेशल एबिलिटी। तो उसको मैं यहाँ सिर्फ इसलिए इतना जोड़ रहा हूं कि अगर हम अपने आप को, हमारे साथियों को, पूरी मानव जाति को एक स्पेक्ट्रम पे देखने लगे रादर देन 2 कैटेगरीज, एबल्ड और नॉट एबल्ड और एबल्ड और डिसेबल्ड, वी आर ऑल, हम कुछ चीजों में सक्षम है, कुछ चीजों में अक्षम है या उससे भी मुश्किल स्थिति में है, ऑल ऑफ अस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम या सर्वगुण संपन्न राम तो कथा में होते हैं। हम में से, हम सब इंसान हैं, हम सब आम आदमी है, तो हमें ये कतई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम में से कोई सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अनजाने में ये हो जाता है। knowingly or unknowingly, individuals and subcultures tend to believe this, and especially when it comes to dealing with others who might be differently abled or specially abled. तो मुझे लगता है कि ये हमें हमारे सोच में लाना पड़ेगा। मेरा 8वां या perhaps 9th point is, I think what Madam Jayanti Pujari and Gupta ji were discussing. I am totally in agreement with Madam Jayanti Pujari that one mistake we should not make is link social class or education to attitude for universal design. जयंती पुजारी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि कहीं even that thought is a bit fast based, but उतना हम अपने आप को छूट दे। जो मैडम जयंती पुजारी कह रही थी कि ऑटो रिक्शा वाले कई बार बहुत अच्छा समानता का एटीट्यूड रखते हैं और प्रदर्शित कर पाते हैं, बजाय डॉक्टर्स के और बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड व्यक्तियों के, पेरेंट्स के मुकाबले बनिस्बत। तो एक गलती हम ये ना करें कि साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और सोशली अप्रोप्रिएट एटीट्यूड is not a preserve of only the rich or the educated or the professionals or the upper strata. In fact, मैं जयंती पुजारी में इतना सहमत हूं कि वो शायद क्लास और एजुकेशन उसको और खराब कर देता है। The previous thing that I mentioned about being better than others, हम या हमारा परिवार या हमारा वर्ग दूसरों के मुकाबले बेहतर है, ये now this is a very delicate thing, and that's perhaps one of my concluding points. मानव जाति या कोई एक व्यक्ति अपने, या आप और हम जैसे हमारे जो इतने सारे साथी लोग इस एरिया में काम करते हैं, वो कैसे इसको करे कि ऑन दी वन हैंड कंपटीशन, हाई sharp competition, excellence, striving for excellence is a necessity and is a useful human trait. वो करें, लेकिन साथ साथ हम एक्सक्लूजन न होने दें। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम एक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे, तो वो जो हाई कंपटीशन और एक्सेलेंस का ड्राइव है, वो अननोइंगली एक्सक्लूजन ला ही देगा। जो एक्सेल नहीं कर पाता है या जो एक्सेल नहीं कर पाते वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये ना हो, ना हमारे इंडिविजुअल निजी तो सोच में, ना हमारे छोटे से परिवेश में जहां भी जिस टीम में काम कर रहे हैं, ना समाज में। हाउ डू वी अचीव दैट? हाउ डू वी अचीव एक्सेलेंस विदाउट परमिटिंग एक्सक्लूजन is the dilemma and is the question to me, it seems. And to end, when you talk about higher education, obviously जो mainstream higher education systems है, वहाँ आम समाज के मुकाबले भी excellence और high competition का बहुत value है, and so
like Alok and we have been trying and we have been discussing, a few places like Subharti are able to at least accommodate the idea, start with the idea of inclusive education in higher education. But it is going to be difficult. Higher education may to try and retain the emphasis on excellence without raising the possibility of exclusion is a huge challenge. बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए आने वाले दशकों में in India and everywhere across the globe to bring that idea of equality in higher education in the context of people with special abilities. I will end there, Alok, for now. एक बार फिर कहूंगा, माफी चाहता हूँ, आपको मैं सुनने को बहुत उत्सुक रहता हूँ, लेकिन हमारे एक और कॉन्फ्रेंस चल रहा है वेब पर ही, और वहां मुझे 4 बजे से करीब 45 मिनट तक या 1 घंटे तक एक सेशन शेयर करना है. तो मुझे आने वाले 3 या 5 मिनट में आप सबसे इजाजत मांगना होगी. अगर कोई टिप्पणी हो, अगर कोई विचार हो, अगर कोई कमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, प्लीज फील फ्री. आलोक जी जी, डिसएग्रीमेंट की तो कोई बात ही नहीं है. दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ यू टॉक. यस, सो शुड वी गो टू, मैं सोचता हूँ कि गुप्ता सर का मैं अंत में करूं, सो दैट द होल निचोड़, द फीडबैक गुरु विल बी रिमेन फीडबैक गुरु. यस, मेरी प्रॉब्लम आलोक ये है कि मैं शायद वापिस न जुड़ पाऊं जब तक आप पूरा करेंगे सेशन. ठीक है. तो एक बार मेरा और धन्यवाद और बहुत अभिवादन आप और सारी मनोविकास टीम को. अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से किसी के कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, तो जरूर इस समय अगर आप परमिट करो 2-3 मिनट में, या प्लीज हो, या अगर कोई कहना चाहे, है ना. I have unmuted the mic for all. Okay, right. Yeah. किन्हीं को कोई सवाल है, कुछ भी है, तो you can ask, sir. Please feel free to ask any question. Yeah. कुमारी यलमपत्ती, yeah. कुमारी यलमपत्ती, you want to ask? Yes. Anybody else? कोई तो पूछ रहे हैं कोई सवाल. ओके, नहीं. ओके डियर. या एक बार और आलोक, आपको और इंदिरा को बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच टू यू. साहब से और गुप्ता जी से माफी चाहता हूँ, मुझे दूसरे सेशन में जाना पड़ेगा. Thank you, sir. I wish express my gratitude to Desai sir for providing such a good information, such a good speech, such a good blessings. So thank you very much, sir. We are very grateful to you for your best support and cooperation. And we will go to Dr. Bhusan Punani. Okay, maybe yeah. We will go to Bhusan Punani, sir. Sir, unmute yourself, sir, please. Yeah. It's okay now? जी सर जी. पहले तो मैं श्री डॉक्टर निमेश देसाई, डॉक्टर जेपी गुप्ता, आलोक जी और मनोविकास के पूरे परिवार को अभिवादन देना चाहूंगा. I like to congratulate all of you for organizing this seminar and talking of inclusive colleges. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा. आज से लगभग 6 साल पहले हम लोग संघर्ष कर रहे थे MHRD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, कि स्कूल शिक्षा में, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में मेंटली चैलेंज, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए. हमारा दुर्भाग्य था, हमारे देश की 3 अपेक्स संस्थाओं ने, रिहेब काउंसिल ऑफ इंडिया, चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज, NIMH, सभी ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है. ऐसे बच्चों को स्कूली
खासकर सेकेंडरी हेल्थ शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनका विकास केवल 13 साल की उम्र तक के बच्चे का होता है, इसलिए उनको प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा जाए। We had a great fight, great battle, great argument, great advocacy with MHRD. Finally, we succeeded. That was a long story. To cut the story short, finally the ministry agreed that these children, these students can go to the secondary and higher secondary education. I also published an article on that. और आज 6 सालों के बाद, जब एक जमाने में, एक समय में स्कूली शिक्षा मुश्किल थी, कठिन थी, संभव नहीं थी, उसका विरोध हो रहा था, आज हम कॉलेज लेवल पर उस शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उससे बड़ा अभिनंदन कोई नहीं हो सकता है। मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आई लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। And I just try to justify that my opening remark is the college level inclusive education is not a matter of choice. It has to be there. There's no reason, even one reason that why we should not have inclusion at the college level. Everything that I'll try to justify in my presentation leads us to one conclusion, that every student, even a student with disability, student with all disabilities have a right to go for education at all levels like any other student. And to do that, I'd just like to share a few examples. Yeah, just on the screen, you can see a news item published in Ahmedabad Mirror, which is a lead paper. Sir, can you make it in the full screen here, Okay, presentation mode? Yeah. In the presentation mode here, this place. Okay, no issue, sir. Is okay? Yeah, fine. Is it coming now? It's coming, but it is not coming in the full screen. Okay, The I'll presentation mode. So at the end of the जो नीचे वाला लाइन है ना, जहाँ पर 121% लिखा हुआ, उसके पहले you can make it presentation mode. Yeah. No. No. Escape it. So escape. Yeah, this one. Yeah, click it. No, it is not coming. Is it coming? You could, Yeah. So let it be, sir. This way only. Okay, it's fine, sir. But you have to change the slide. okay, I just, you know the key? Just tell me, I'll do that. Yeah. So at the end of the bar, जहाँ पर ये orange color का जो bar है ना, comments लिखा हुआ है. हाँ जी. हाँ, उसके बाद और एक है, उसके बाद 4 पॉइंट वाले हैं, एक किताब खुला हुआ है, और उसके बाद ये प्रेजेंटेशन का जो पॉइंट है ना, क्लिक दैट वन, और आगे 4 वाले नहीं, और किताब ये और आगे, yeah, that one, yeah. Just Is it okay now? No, it doesn't came. Yes, maybe okay. Sorry. Yeah, we will go in that way only. No issue, Okay. sir. So you have to change the slide only, the second slide, uska Yes. wala. Yeah. Yeah. I just come to the second slide. Is it seen now? First is coming, second is not coming. So I can see the second. It takes a few seconds. Yeah. Yeah, it will come to the people very soon. So there's a news item. First time we succeeded in Gujarat to have a student like Shivang Sastri, who very successfully completed his graduation despite being a mentally challenged student. And thanks to the sister who's seen in the screen. Have you got the slide on the screen now? No. Sir, can you just stop the sharing, Okay, and I will share from here only. Sure, do that, sir. Yeah, that will be, just a Yeah, moment. do that, sir. And you can keep on changing as I... Yes, definitely, sir. So now it is coming in big slide. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Yes, now we go to second. Yeah. Yes. This one? Yeah, perfect. So Yeah. this is a news item which appeared in Ahmedabad Mirror, where for the first time we had a student called Shivang, who's mentally challenged. He successfully completed his graduation. Full credit for that goes to the teacher, Mary, and other students who supported him. So this established for the first time in our state, in our environment, that such students can go for inclusive college education, provided
you have the right atmosphere, you have the right teacher, you have the right college. Next, and that made a big difference to the psyche of the people. So it became a justification that if a student like Shivang can do his graduation, nobody can stop him from doing his school education. We had more than 500 teachers under IEDSS. We are the only state in the country where we had secondary level education for all the children, covering almost each and every child in normal school, in the regular schools. And we succeeded in convincing the MHRD that time, now Ministry of Education, to see that such children, such teachers continue working and such children have right to go to the school. Another very glaring example is totally unbelievable. Disha from Vadodara. She's one of the first girl with Down syndrome next to complete her BCom. When I tell these people that she has done BCom from MS University, which is a very prestigious university in Gujarat, people don't believe it. They say, no, it's not possible. So I'm compelled to upload the mark sheet from the university, and you all will be very honored to see that Disha completed her graduation in the first trial with the regular marks, without any debate or any special marks. So it's possible. The first lesson today is that college education is possible, provided we motivate them, we guide them, we give them the support. In case of Disha, the total credit goes to her mother and her teacher, who struggled very hard to see that she gets. Now on the screen you have a very, very nice girl, Shruti. She's deafblind. Can you think a deafblind girl can do graduation from a regular college? I'm sure your answer will be no. But Shruti has set a very good example for this country. Despite being deafblind, she graduated from a college, and wherever you are, you can clap for her. She's the first deafblind girl in the universe to do her diploma in physiotherapy. She's the first person to do a diploma in physiotherapy, and you will be very happy. On 3rd December, she'll be speaking in the Civil Society's presentation on the UNCRPD. She's one of the first person from the country to be selected through voting to make the presentation, and she's a product of Inclusive College, and today she's a role model. She works as advocacy manager with Sense India, and she's promoting work for other deafblind students. Next, and just to convince you all, this is what she's getting from the Vice Chancellor of Ahmedabad University, a diploma in physiotherapy, and on the right side, she is teaching a child. Now she's a pediatric physiotherapist. The biggest advantage is children have no language. Children know the language of touch. वो स्पर्श को समझते हैं, और ये कारण है कि श्रुति एक बहुत ही सफल पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि बच्चों के साथ काम करती है, and she is the product of an inclusive college. Next, sir. And if you see another very glaring example, for other disability, you have Amit Jain. These are all the real characters. There's nothing from a book. It's all the real life stories. Amit Jain is one of the first students with visual impairment to crack CAT, the combined admission test of Indian Institute of Management, Ahmedabad. First person to do his MBA from IIM Ahmedabad, which is very inclusive. And he set the tone for other people to join that institute. He went on to do his doctorate from IIM Cal. And again, you will keep your hands together. He's doing his postdoctorate from a university in Switzerland. So if a person with total blindness can do in the inclusive college and can go to that, please sir, keep on going next, can go to that level. So inclusive college is not a matter of debate. It's essential. And Amit knocked at the door of authorities to get the benefit of reservation of 5%, which was 3% that time. And his confidence and his self-empowerment enabled him to break the barrier that even the management institutes could be inclusive. After that, Gaganbir Singh did his postgraduate from IIM Bangalore. Now there are a number of examples. There are hundreds of students who, despite this next disability, could do their education in the inclusive colleges. In fact, colleges are not inclusive. Very important thing is these students went and made the colleges inclusive. They motivated authorities. They motivated the people to see that the colleges become inclusive and take people with all disabilities. Next, sir. Another very classical example, and we are proud of that. You see Daria, a low vision girl. She also studied in an inclusive college,
And very rarely you see a girl who gets 2 gold medals, one for standing first in the university and one for standing first in a particular subject. And she has done her doctorate, again from the inclusive setup. So person like Dharia have established there's no limit if you give them the chance to go to a college and next to study like anybody else and to set an example. Another very classical example is one of the most favorite administrative official of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ravi Arora. Again, the first one to crack IAS despite being low vision. And today, I mean, he's definitely going to be one day Chief Secretary of State of Gujarat. The way he's progressing, he's performing probably better than most of his cited counterparts. So again, he's a product of Inclusive College, and Inclusive College motivated him to come to that level next. And see Anandi Ben in the back screen, who was the Chief Minister when he joined, and Ravi Arora, as you see, he had the benefit of, again, reservation in employment. And today, there are a number of such people who come from the inclusion and go for their path-breaking employment or path-breaking assignment. Next. Now, going to the next case. Again, Abhishek, my very favorite student, totally blind. He did his management MBA. And today, when you go to Bombay Stock Exchange, and if you are dealing in the share market and you want to visit BSE, and you ask for the PRO, you will meet Abhishek. He's one of the first person with disability to become a PR of a premier institute, BSE, Bombay Stock Exchange, and he gets more than ₹1 lakh a month. And he could establish, again, a product of Inclusive College, that inclusion can make all the difference to anybody. Next, sir. He also married a person with blindness. She's also doing very well. Now, friends, coming back, अभी मैं आपको संबोधन करना चाहूँगा कि जो सभी आपने केस देखे, they are a role model. They all are product of the inclusive colleges. They went through the same process of studying an inclusive college, and they availed all the facilities and opportunity for development. And friends, they are the role model, they are the trendsetters. Just to establish that we don't need to have a debate that whether college should be inclusive or not. College has to be inclusive, but it will become inclusive when people like them go and fight. It will not be easy for them. They have to struggle. They have to fight with the authorities. They have to get the facilities. They have to get the writers. They have to get special support. They have to get reasonable accommodation. Only then they could compete to this level. So once that is done, which is assured under our law, which I'll come back, they can achieve that level without any problem. Yeah. Now my very important point, I like all of you. मैं चाहूँगा कि आप सभी इसको ध्यान से समझिए कि मैं justify करना चाहूँगा कि हमारे colleges, हमारी शिक्षा, हायर शिक्षा inclusive क्यों होनी चाहिए. पहले आप जानते हैं. I just like to repeat. 5%. There's a 5% reservation in higher education. It was 3%. Now in the new law, ROW rights of person with disability is 5%. Because of that, every child, including a child who is mentally challenged, have a right to go on reservation of 5%. And most of universities in the country are respecting that. If you know of any college, any university which is run by the government, getting grant from the government, if they're not doing reservations, please let us know. We ensure you that university and college will definitely go for reservation. There's no reason why they should deny, because we have a judgment. I'll show you. We have a Supreme Court judgment which says that it's mandatory. And then we have a policy. Friends, I'd like you to focus on new education policy. And congratulations to all the stalwarts who worked very hard to see that NAP recognizes inclusive education at the higher education level also. I'll come back to that. Even the University Grant Commission for last almost 15 years has been promoting inclusion at the college level. And to do that, next, they have provided the special grants, special support. There are a number of universities with the study center, disability study center. And Delhi University is a classical example where there are thousands of students, thousands, not 1, 2, or 100. There are thousands of students studying in the inclusive colleges, and they are given the concessional hostel, free transport, support services, and many of them are excelling and with all the disabilities. Now, the fourth reason why we have to go for inclusion justification, there are a number of court orders. There's a very important judgment, which I'll show you in case of Palak Jain.
where the High Court gave the reservation, then Kerala parents gave reservation, Supreme Court gave the mandate that is mandatory. And so once you have the judgment, once you have the law, there's no reason that why college should not be inclusive. And I must acknowledge there are a number of colleges across the country, in many states, in many cities, which already have been following the principles of inclusion. There are thousands of students which are studying, but every college needs to be inclusive. We cannot be happy that Delhi University is inclusive, but other universities are not inclusive. Every university, every college must be inclusive. That's what we should target. And sixth and very important thing, now we have the role models. Now we have hundreds of examples where they are going for the IAS, ICS, IPS, etc. And they are cracking all the exams and going for ITs, joining Wipro, joining TCS, like anybody else after going through the inclusive colleges. So these role models are established that our students have a future. If the colleges are inclusive, the future is bright. If the college becomes inclusive. Next, sir. And this is a justification that why our college should be inclusive. As I told you, that even the law, section 32 of Rights of Persons with Disabilities, is a mandate that every educational institute has to reserve 5% seat in higher education, and it applies to all the government and government-funded institutions. And there's also age relaxation of 5 years in case of admission. And there's a Supreme Court judgment. I'll come in the last part. And as I mentioned, University Grant Commission has also mandated setting up the liberal study centers in most of universities, which is a step towards encouraging inclusive colleges. Next, sir. And this justifies that every college has to be inclusive. Even if you go for now the new law, the Rights of Disabilities, is very clear that every course which concern people with disabilities, for example, B.Ed, for example, nursing, for example, MBBS, medical, nursing, etc., social welfare, rural development, ASHA worker, they all must have a disability component in their education. That means every type of education will have a disability component so that the faculty, the colleges do recognize that disability component is very important, and that's a step towards moving the colleges towards inclusion if we take in the right perspective. Next, sir. And you can see the other options that I have. As I mentioned, this is a path-breaking judgment from High Court of Gujarat, which came on 3rd December 2000 on the World Disability Day. It's the first judgment in the country which mandated horizontal reservation for people with disabilities in all educational institutes, in higher education institutes. And this judgment has been a landmark in convincing many universities to go for reservation next. And this judgment was supported by Kerala Parents Association. And if you see the Palak Jain, who was a person with disability, she wanted to run a medical college. Ultimately, she took recourse to the High Court, and High Court did held that she is eligible to join on a reserve seat. And that's the beginning of reservation in higher education next. And this judgment was supported by Supreme Court judgment, which was Kerala Parents Association. This is again a very bold judgment that set the tone. The Supreme Court also desired that there should be reservation for people with disabilities as a mandatory issue. So every college, every university has to be inclusive. And I must congratulate all of you that our country is heading towards the new education policy. And if you see the theme, it's a very beautiful theme: universal high quality education for all learners, regardless of social and economic background. It's a very broad statement that you don't have to see at the background. Everybody must have right to high quality education. And the focus of this policy is on historically marginalized, disadvantaged and underrepresented groups, students, including children with disabilities, and they should receive safe, inclusive, and effective learning. This is a beautiful statement that there's no reason why we should talk of only exclusion. Inclusion is the order of the day. Even our policy lays great emphasis, and the outcome of this policy is achieving economic and social mobility, inclusion, and equality. This is a beautiful statement which is becoming a reality next, which will promote inclusion. And there's a special chapter, chapter 12, on inclusion in higher education. There's no country which has a policy where higher education is very specifically mentioned. And this section 12.4 focuses on encouraging and supporting for successful transition to higher education.
And it applies to all disabilities, all 21 disabilities. And they must move from school to college education. And it mandates the universities to provide scholarship, freeship, incentive to such students, and to set up high quality support center. What are being called now the disability center at the moment, they'll be called as the high quality support centers. And university should provide funds and academic resources to carry out these effectively. I like जितने भी पार्टिसिपेंट ये सुन रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पॉलिसी एक नया कदम है, एक नया स्टेप है इंक्लूजन के लिए, और इस पॉलिसी का उपयोग करके आप किसी भी कॉलेज को इंक्लूसिव बना सकते हैं, बनाना चाहिए, तो बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए. एंड द पॉलिसी स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शुड earmark funds for education of the children with special needs, and they should be given scholarship to meet their specific needs. Next. So it's a matter of great honor that our policy also recognizes our colleges to be inclusive. And this policy also desires that for using technology for their better participation, learning outcome, the use of technology is also focused. And I like to impress upon that the technology is a great leveler, is a great support to people with disabilities. Because of technology, now they're going for IT, they're going for all sort of new streams of education. So with the use of technology, every education can be made inclusive. And the policy also desires the admission process and curriculum should also be inclusive. We cannot stop at just talking big things. Even the admission has to be inclusive. Next, to see that people with disabilities have right to get into the school. Again, policy says on accessibility, every building, every facility should be accessible. It should be disability friendly. These are not just the words. These are very important statements which we should understand. And the best part of this policy is, which you must remember, it recognizes, it validates that all provisions of Rights of Persons with Disability Act are to be respected. So this is the first time that policy validates a law, validates our special law, which is a very big achievement. And because of that, whatsoever is happening now can be happened as a matter of policy. This policy also desires an efficient mechanism to ensure for optimal allocation and utilization of funds earmarked for children with special needs. So there's a special dictate. The fund must be utilized for that purpose. Friends, according to me, this is something very important. What makes a college inclusive? I'm talking all disabilities. I like you to understand this particular slide very, very correctly. First of all, the faculty should be sensitized and oriented. Our biggest stumbling block at the moment is that our faculty is well-meaning, they are well qualified, but they're not aware what are the specific needs of people with disabilities, how they can be facilitated or accommodated. So first of all, instead of cursing the darkness, let's see a ray of hope. Instead of telling that faculty does not cooperate, we should orient them, we should sensitize them. We have to modify our admission procedure. We just can't ignore that people cannot reach, so they cannot go for a competition. There has to be facilitation so that every person with disability can compete with others and the schools. So we have to modify our admission process, and we have to make the college environment barrier-free and accessible. Every college, every university is a mandate by the Rights of Persons with Disability Act. In 5 years, every existing infrastructure has to be barrier-free. We should use that to see that every college, every university becomes barrier-free and accessible. And every university should have a resource room like Delhi University. Like many of the universities have a very beautiful resource rooms available where there's a lot of technology, assistive devices available, and that has made the life much easier. And now people with disability can compete. There cannot be college unless you have a proper resource room. And the concept of digital library and accessible material. If you go to Bookshare, go to Sugamya Pustakalay, these two sites give you a lot of material. Almost every book today at the college, doctorate up to doctorate level, is available in the digital format. And I like to tell everybody, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि कोई किताब, कोई मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप बताइए Bookshare और सुगम्य पुस्तकालय, उसको अवश्य डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में लेके जाएंगे. There are more than 6 lakhs books available on the Bookshare. There are more than 50,000 books on the Sugam Pustakalay. Now, this is a step towards inclusive higher education. And again, I request all the college authorities, whenever you take a staff for your college,
take people who are understanding of the special education, have some background of special education, will make a big difference. Next, for making the colleges inclusive, that will be a very practical step. And then we have to adopt. There are a lot of guidelines. Guidelines have been issued by Chief Commissioner, by many state governments, by departments of education, Ministry of Education, about the readers, writers, and other technology-based support. We must understand ये guidelines क्या है, मार्गदर्शिका क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, उसकी क्या facilitation है. We should understand and use them as a matter of tool, as a matter of right, and people with disability should adopt these guidelines. Then there are new methods of assessment. See, every child can't be assessed in the same way. It depends on the nature of disability. You have to change the method of assessment and evaluation. And this is also mandated in the law and in the guidelines. The method can be changed so that the procedures are inclusive. And that will be a big step towards making the colleges inclusive. Then again, as I mentioned, audio books, digital books, sign language, special material. Again, this is not my point. This is already mandated. It is there in the law. It's only that we have to take at the higher education level and do advocacy to see that colleges start accepting that and make it a part of their mandate. And then again, the law says reasonable accommodation, giving the things as per their specific needs. If they need a smart cane, if they need a wheelchair, caliper, crutches, walkers, digital books should also be available. Then we have to facilitate students who avail concession. This is their right. There are concessions, there are scholarships, there are benefits, but many people are not able to access that because of long procedure and not lack of awareness. Colleges को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनके लिए concessions हैं, benefits हैं, facilities हैं, उनको मिलनी चाहिए. And most important, our children with students with disability must participate in all type of activities. They should be visible. They should be part of the whole college atmosphere. Unless that is done, they cannot compete. Then colleges should be motivated to celebrate this World Disability Day, Helen Keller Day, Down Syndrome Day, Mental Health Day, so that people with disability get the focus. And most important, I request all the people who are working for the colleges, you must invite people with disabilities as a role model, as a guest lecturer, to speak on these occasions. So people who are non-disabled, they also get motivated. They also get aware that people are there who can perform very well. And my request to all of you, and especially college management, से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि take people with disabilities as your friend. You become friend, philosopher, and guide to these students with disabilities, and you must become a counselor and support to the teacher, teaching faculty. We just can't say they don't know. We have to support them, we have to counsel them, and we should also involve the parents, and we as the college management should become a source of inspiration, and we should become a think tank to the parents so they are also aware how to go about next. And very important, last but very important, please use the new technology. Please use the new assistive devices and go for innovation. Unless we do that, colleges cannot be inclusive. New technology has to be adopted. Let's throw the old things out of the window and go for the new technology, a new method, new procedure, new schemes. And we should see that with our students avail and share the latest information on newer laws, guidelines, and entitlement. Law is a big tool. It should be used as a tool to enable the students to enjoy college environment, make inclusion a way of life. The college has not to be just a physically inclusive, has to be psychologically inclusive. As I mentioned, there's a path-breaking judgment by the Supreme Court that the Supreme Court directs the person with disability to be extended the benefit of lower score in aptitude test, as in case of SC/ST for admission to educational institute. There's a benefit of 5 marks which is given to SC/ST. First time the Supreme Court has said such benefit, even the people with disabilities are eligible. This encouraged their admission to the colleges. And the very landmark judgment, which we got 2 years before, Supreme Court even directed a person with low vision can be admitted to a medical college. And there's already 2 students who are doing their MBBS. Friends, if we follow all these guidelines, I'm sure our colleges, our life, our approach will be inclusive. Thank you very much. And you all have a nice day. I will open a mic to our audience. If somebody has any question, you can ask, sir. Otherwise, this was a great, I think it's a very
expressive and it has very informative information you said. मैं तो यही कहूँगा सर कि जब भी हम लोग थिंक कॉलेज के बारे में सोचते हैं, और I think we have started thinking this think college in the year 2010, and there we started the community college for persons with intellectual and developmental disabilities. सर उस जमाने में ही ये बात हो रही थी कि हमारे बच्चे 7वीं क्लास से आगे, हमारे जो स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं 7वीं क्लास से आगे नहीं जा सकते. एंड in the year 2013 we had the first convocation of our community college. There they were awarded by the degree and diplomas from Indira Gandhi National Open University. तो उस समय स्तुति कक्कड़ मैडम थी सेक्रेटरी. सी सेड कि नाउ हम लोग किसी तरह से भी लॉ में 1% अब तो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन ला ही सकते हैं. वी कैन शो दैट द रिजल्ट. सो आई थिंक एवरीथिंग इज चेंजिंग. और आपने जो सर आज एकदम पूरे एक ब्रॉडर व्यू दिया है, एंड दैट आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ हियर कि सर ने तो पूरा एक सिस्टमेटिकली बता दिया कि थिंक कॉलेज सोचना, जो हायर एजुकेशन है सोचना ही नहीं, अब तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे हर जगह आना बहुत जरूरी है. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग द ग्रेट ओपनिंग रिमार्क्स. वी कैन से कि हमारा जो थिंक कॉलेज का जो अब एक नया एक जो पैराडाइम होगा वो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर दिस थॉट, एंड होपफुली कि हम लोग इसको और आगे ले जाएं. वी हैव या प्लीज. Sir, I want to talk about that Shivang student. To respective Punani sir, Bhushan Punani sir, very great achievement in our special education. Thank you very much. He is a role model. Yeah. He has proved to the world Thank you, sir. that it is possible. And because of this Manovikas Institute, we have all this knowledge gained. And thanks thanks to our Malik Alok sir again. Thank you. Anybody else who wants to say something? We have two power sir, Bhushan Punani sir, I'll request for only कि हमारे दो presentation है, poster presentation है. I want to show you from here, and definitely that same poster presentations are on our website also. Just a minute. Namaskar, Alok sir. जी. This is Varsha Arora Singh. जी. And it was a wonderful program. मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ CRE पॉइंट के लिए ही अटेंड करने का सोचा था, बट ट्रस्ट मी, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मिनट मैंने ये प्रोग्राम 3 दिन में छोड़ा है. एंड आई एंजॉयड अ लॉट, लर्नड अ लॉट, एंड all speakers were very nice. मुझे इतना अच्छा लगा अटेंड करके. बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला. आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. मैं बहुत ज्यादा डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ काम नहीं करती हूँ, बट फिर भी मुझे इन 3 दिनों में महसूस हुआ कि मुझे भी करना चाहिए. एंड इवन मैं कर सकती हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा. अब तक जितने भी प्रेजेंटेशंस मैं सीआरई के लिए देखती आई हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं एंड बहुत सारे पीपीटीज एंड ऑल, बट जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ बोला, चाहे वो पीपीटी के साथ हो या चाहे वो बिना पीपीटी के साथ हो, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू. बहुत अच्छा. एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज आपने किया, सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे आपने जब चीजें एक्सप्लेन कर दी सभी को, बहुत कुछ क्लियर था. इतना अच्छा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सारे इतने इजी असेसमेंट मैंने आज तक कभी किसी सीआरई में नहीं देखे. एंड एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, very nicely coordinated. Thank you so much, everyone. Thank you. We have one presentation by Alfonso Joseph. Sir, I want to talk. All credit goes to only Alok sir, because they are very busy. No. All credit goes to our esteemed experts. We student also you have trouble, but you are no issue. This is Madam Mr. Joseph. Are you here? You can explain your poster.
Yeah, this is, Yeah. can everybody hear me? Yeah, please. Yeah. Yeah. So this I have just put in through words what I basically felt about the special education that we have right now. Most of the time, my education system is in such a way that we put everybody together without looking at their skills. And most of the children with special needs in India are illiterate, more than 45% of them. Okay, so this is taken from the census of 2011. So what I mean, what we felt, or what basically I work towards for universal design of learning is through this particular poster that I want. So it is equality, yes. We are all looking at equality. All of them are standing on the same line, equity, and finally liberation. Okay, so finally they should be liberated from that entire thing of special needs, which is there. So it's a concept which is used by everybody. And why do we use this why do we use this design for learning is because they're diverse people, diverse cultures, diverse styles of learning, which is there. And the last one, which I want to know, this was a very beautiful poster that when we worked on thing from, definitely I've got this from the net and thanks to the Otago University, which is there. So here is like we can actually see about the entire thing on are we actually ready for universal learning, okay, at the college level. Okay, so most of our places in India are basically like this. We cannot read, like when we see the advertisements of mutual funds, which is there. Okay, so we are not able to read, but we still do invest. The slopes, which is there, the ramps, which is there, is so inaccessible. Even the writings, which is there on certain floors, is little inaccessible. And more so when we work with a lot of children with disabilities, especially speech, hearing, and multiple, we look at this right hand to left hand, which is there. So that shift which they make is something which is really difficult for most of them. Are our classroom furniture, okay, actually accessible to children? Okay, so through these different posters, I just wanted to put out that if we work on the 7 principles, we'll have to look at even the classroom, accessibility, furniture, everything which is there for universal learning. This is exactly what I wanted to put out through my poster presentation, which is there. Thank you. Thank you, sir. and thank you, And Madam I'm Joseph. from Bangalore. Yeah, and Joseph, Madam Joseph, she is associate professor and head of department of psychology. Yes. Yeah, and I Dr. work with, S.R. Chandrasekhar Institute of Speech and Hearing, Bangalore. So thank you, ma'am. Thank you so much for giving me this It's a very opportunity. good Thank presentation. And then we have the another presentation. Just I'll show you. This is just a moment. Madam Reshma Shah, could you start your videos and then I'll share your presentation. Yes, Madam Reshma Shah. Yes, sir. Yeah, please. Start your video. Just start my video, sir. I think Bhushan Punani sir know about the PNR Society. We work very closely with them. Yeah. Yes, Reshma sir. Yes, Reshma ma'am, please. नमस्ते सर. नमस्ते. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरा ये पोस्टर है जो हैंडमेड है. ये कोई वर्सेस वाली बात नहीं है. सिर्फ ये ट्रेडिशनल थिंकिंग वन साइड है और न्यू वे थिंकिंग है. ये स्पेशल स्कूल का जो मेरा कंसेप्ट है कि जहाँ पर प्री प्राइमरी सेकेंडरी प्री वोकेशनल वोकेशनल के स्टेजेस हैं और जहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर ये जो बच्चा है जो कि वो सभी स्टेजेस पार करके जब वोकेशनल की तरफ जाता है, सभी इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्टेन एज तक स्कूल में रख लेती है, फिर उसको छोड़ देती है. तो तब जो पेरेंट्स है तब उसको सोच में आता है, जो उसके फादर है वो, कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे.
और जो मदर है वो वरीड है कि लड़की है तो क्या करेंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा। और मोस्टली जो वोकेशनल की स्टेज से फिर मे बी बच्चा वापस घर पे आ जाता है, जो कि मैंने ये पोस्टर में दिखाया है। मे बी किया है इसलिए कि कोई कोई बच्चा ऐसा है भी, कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे है भी जो कि आगे कुछ काम कर लेते हैं या फिर कुछ कमा लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो चिल्ड्रन विथ आईडी है वो मोस्टली घर पे आ जाते हैं वापस स्पेशल स्कूल से। दूसरी साइड मैंने जो बताया है इंक्लूसिव सेटअप दिखाया है, जो कि बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में जब जाते हैं तब मोस्टली कितनी भी स्कूल्स ऐसी है जो कि उसको मतलब ये बच्चे क्या है, कैसे वो काम करेंगे, तो टीचर से वो थोड़ा सपोर्ट कर लेते हैं। अभी भी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो अभी भी उसको मतलब ये होता है कि ये क्या है, ये कैसा, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वहां तक बच्चे उसको सपोर्ट शायद नहीं कर पाते। लेकिन जब बच्चा सेकेंडरी में जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल पर, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ में भी आता है कि अच्छा ये भी हमारे जैसा ही बच्चा है, थोड़ी बहुत तकलीफ है। और वहां पर जो टीचर्स है उसका रोल बहुत महत्व का है, जो कि वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ वो हमारे मतलब कम्युनिटी से ही बच्चा है, थोड़ा बहुत उसको थोड़ी तकलीफ है लेकिन वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो वहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। फिर जाता है बच्चा हायर सेकेंडरी में, तो यहाँ तक तो प्रिंसिपल्स भी अपने काम में लगे थे कि ठीक है ऐसे 2-3 बच्चे हैं, कभी कोई आया तो कहते कि हाँ डिसेबल्ड है, ऐसे बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन सेकेंडरी जब जाता है कोई बच्चा तो प्रिंसिपल भी वहाँ थोड़ा उसको सपोर्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ये हमारा रिजल्ट नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मोड्स ऑफ स्कूल है वो चाहती है कि 10th और 12th में हमारा रिजल्ट इसके कारण बिगड़ेगा। तो वहाँ पर सपोर्ट मिलता है प्रिंसिपल के भी। और देन हायर एजुकेशन या कॉलेज में जाता है तो वहाँ कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिलता है कि इसको स्कॉलरशिप मिलती है कि हाँ बच्चा यहाँ तक पढ़ा है, चलो थोड़ा बहुत हम भी मदद कर लेते हैं तो बच्चा आगे जा सकेगा। वहाँ जो है उसके मदर फादर मैंने वहाँ दिखाया है कि वी बोथ आर हैप्पी, नो वरीड नो टेंशन, हमारा बच्चा है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। और वहाँ पर उसके द्वार खुल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ओपन एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकता है, और गवर्नमेंट जॉब का भी उसको सपोर्ट मिलता है या उसको वहाँ पर हो सकता है। तो ये इंक्लूजन और ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग वाली चीज़ है ये कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आगे भी सेशंस में स्पेशल एजुकेटर्स ने पूछा कि जो हाई सपोर्ट नीड्स वाला है उसका क्या होगा या ये होगा, लेकिन मैम ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये दो जो थिंकिंग है ये मैंने थोड़ा हैंडमेड करके मैंने बताने की कोशिश की है, और मेरा ये थिंकिंग है तो मैंने दोनों ऐसे पास करके मैंने बताया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Oh, thank you. Now, before we'll go to Gupta sir for all the remarks. Yeah, please. 2 मिनट संभालिए, मैं आया। ठीक है 2 मिनट में आया। ठीक है। भूषण पुनानी सर, we have one appreciation award, Madam Dr. A.T. Theresa Kutti Award. Dr. A.T. Theresa Kutti, she was the faculty of National Institute for Mentally Handicapped. Nowadays, it's the National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disability. And she has great credits in the higher education, or we can say the skill development of persons with intellectual and developmental disabilities. And in Manovikas, we have the appreciation award on her name. That appreciation award is very, हमारे 4-5 फैकल्टी मेंबर्स थे जो बाहर के भी थे और मनोविकास के भी थे। दे हैड मेड इट की जो अवार्ड्स है दैट अमाउंट इज अबाउट, दिस इज द A.T. Theresa Kutti अवार्ड का एप्रिसिएशन वर्थ इज 10,000 rupees, एंड नाउ द रिजल्ट इज विथ मी। एंड आई वुड लाइक टू से कि मैं वर्चुअली ये जो अवार्ड का अमाउंट है मैं भूषण पुनानी सर के हाथ से मैं इन लोगों को दिलवा रहा हूँ। ओके, बोल के तो हो ही सकता है सर। सो we had about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have the 9, including the poster and paper. We had the 9 presenters, and among 9 presenters,
अभी जो दो आपने देखा है जो पोस्टर प्रेजेंटेशन, उसको जो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे इवैल्यूएशन कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि रेशमा बहन एंड अल्फोंजा जोसेफ मैडम को should give the third prize of 1000 each rupee, 1000 each. Yeah. So congratulations Reshma Bahan and Joseph madam. We have given you the third prize. The certificate and prize will come to you after getting your all the information. And then the second prize is again it is jointly given. Preeti Jain, she is a special educator as well as she is a parent. And then Susan James, she has presented on the accessibility and given the all exam. So this second prize of 2000 each is given to the both of these ladies, Preeti Jain and Susan James. And congratulations to you all. Again मैं यही कर रहा हूँ कि मैं जो है भूषण पुनानी सर के हाथ से आपको प्राइज दिलवा रहा हूँ. Thank you so much, sir. Thank you. And then the first prize, it went to Dr. Nazia. She is the assistant professor. Are she here, Nazia? I think. No. Thank you so much, sir. Yeah, Nazia is here. So open your camera. So we can yes, sir. Because you are the first prize winner. Sure, sir. 1 second. So the prize amount is it is 3,000 rupees. Very good. So the overall we have given that the 3, 7, 9 and 1,000 rupees we have left. उसका हम लोग आपको हो सकता है कि किसी एक पार्टिसिपेंट को we will give the free entry into the or any next coming conference. जो हमारा फीस होता है उसमें हम आपको डिवाइड करेंगे, चाहे एक या दो ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिसको कि हम लोग ये भी इनकरेज करेंगे. So thank you all. This is Nazia Ali. So congratulations, Nazia. Thank you so much, sir. You got your prize. Thank you, sir. And your presentation was good and it went very well to our experts. And then now in each session sir आपको मशवरा के बारे में पता होगा और मनभावन के बारे में पता होगा Punani sir. During this lockdown we have made this two good our programs. मतलब सप्ताह में 4 दिन आते हैं, दो दिन तो हमारे एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड मशवरा. और जो 2 दिन हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं मनभावन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इटसेल्फ, उनके लिए ही कि वो उनका पूरा जॉय हो, उनका पूरा वो. और इसमें जो मेन क्रेडिट्स है जो पूरा प्रोग्राम का, जो इफ यू से कि हाउ द प्रोग्राम इज फीडबैक एंड हाउ इट शुड बी डिजाइन्ड, इट गोज टू गुप्ता सर. एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट गुप्ता सर. Yeah. Sir, Gupta sir, please. This is our pleasure. आप हमेशा जो है कि हम लोगों को इनलाइट करते हैं. And now it is your turn for this conference, sir. Yeah, please, sir. Thank you very much. Thank you very much. भूषण जी, जितनी तारीफ उन्होंने की है उस तारीफ के योग्य नहीं हूँ मैं. अगर ये कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ. एक्चुअली हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग in higher education. So when we talk of universal design in educational setup or framework that guides design of learning goals, मैडम ने भी बात करी थी कि what should be the design of learning goals. जो मैंने अपने पिछली बार में बात करी थी कि रियलिस्टिक गोल्स हमारे पास में होने चाहिए कि बच्चे की जो क्षमता है उस क्षमता के बियॉन्ड हमको नहीं जाना चाहिए. वी कैन बी लिटिल हायर देन दी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड, वो होना चाहिए. देन दूसरी बात कहते हैं कि मटेरियल जो है वो असेसिबल होना चाहिए. हम असेसिबिलिटी की बात करते हैं जब भी, तो ज्यादातर लोग बात क्या करते हैं कि भाई रैंप बना दिया हमने, लिफ्ट लगा दी, क्लास में उसके लिए बैठने की जगह बना दी, बाथरूम के अंदर रॉड्स लगा दिए, रैंप बना दिया, फ्लोर से सब निकाल दिया. मगर मटेरियल जो है वो असेसिबल हमारा होना चाहिए. मटेरियल की असेसिबिलिटी में नो चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. द सेम मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड विद एवरी चाइल्ड. हर एक बच्चे के साथ में वो सामग्री हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं. तो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हमको मटेरियल का डिजाइन करना चाहिए सो दैट इट इज असेसिबल टू देम. बच्चे
उस तक पहुंच सकते हैं। जब मैं बच्चों की उस तक पहुंचने से बात करता हूँ, ये नहीं सिर्फ हाथ में पकड़ना है, उसको वो ग्रैब कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उन चीजों के बारे में जान लेते हैं। तीसरा है, उसके बाद में आता है मेथड्स। वो एक्शन रिसर्च में कहते हैं कि जो एक्शन रिसर्च किसी एक ग्रुप के लिए, एक बच्चे के लिए उपयोगी है, वो दूसरे बच्चे के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल, वी कैन नॉट जनरलाइज इट। हम उसका सामान्यकरण नहीं कर सकते हैं कि भाई उस क्लास में बच्चों के रीडिंग की हैबिट खराब थी या मैथ्स को वो यूज नहीं करते थे, तो हमने वहां पर ये काम किया था, वो दूसरी जगह में भी यूज में हो जाएगा। वो नहीं होता है। तो इसी तरीके से हर एक बच्चे के लिए टीचर हैज टू बी इनोवेटिव, वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभाओं की योग्यता रखने वाला होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, इनोवेटिव होना चाहिए, नई नई चीजों को इजाद करने वाला होना चाहिए। हमने सिखा दिया, नाउ कम्स द असेसमेंट। हमको असेसमेंट के अंदर भी जरूरत है चेंजेस लाने की, adaptations की। There are certain methods, certain ways of assessment which can be adopted like that. जैसे हैं उनको हम वैसे ही ले सकते हैं। कुछ हैं जिनको हमने उनका अनुकूलन करना पड़ेगा, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। As well as the policies. I'm thankful कि यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशल सेल बनने शुरू हो गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उन्होंने इन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर दिए, बुक्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। लाइक मींस दे हैव गॉट मोस्ट ऑफ देयर करिकुलम्स इन साइन लैंग्वेज में कर दिया है। तो जो पॉलिसीज हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, वहां जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सल हो, जहां हम डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें, सभी को हम अकोमोडेट कर सकें, विद डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स। कि अगर हम एक रेगुलर क्लास में देखें तो रेगुलर क्लास में हम कहते हैं कि भाई सब ये नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं, मतलब वो एक ही चीज, एक समानता होती है कि दे आर नॉन डिसेबल्ड, इनके अंदर कोई विकलांगता नहीं है, देखने में हमको ये पता लगता है। मगर इट इज ए वेरी डाइवर्स ग्रुप, बहुत बहुमुखी प्रतिभाओं वाला भी होता है, उसमें कमजोर बच्चे भी होते हैं, बहुत तेज भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, तो बहुत तरह के बच्चे होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इफ वी वांट हायर एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल फॉर दिस चिल्ड्रन, यूनिवर्सल डिजाइन है, तो उसमें मैं यहाँ 4 चीजें रखना चाहूंगा। नंबर 1, सपोर्ट में क्या चाहिए? एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए। एनवायरनमेंट सपोर्टिव कैसे होगा? एनवायरनमेंट सपोर्टिव ऐसे होगा कि एक्सेसिबल होना चाहिए। वो जो वहाँ के वातावरण में टॉयलेट्स हैं, क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी हैं, लेबोरेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, इन सबको आसानी से, प्लेग्राउंड हैं, इन सबको आसानी से एक्सेस कर सके, वहां तक पहुंच सके, उनको प्रयोग में ला सके। तो एनवायरनमेंट में ये हो जाएगा। देन सपोर्ट जो है वो उसको, स्ट्रेस को कम करने वाली होनी चाहिए। जो बच्चे के ऊपर दबाव आता है, जो बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, उस प्रेशर को कम करना आना चाहिए। एंड यूज एंड मेंटेनेंस, हम कॉलेजेस में ला करके नए नए इक्विपमेंट्स रख देते हैं, नई नई चीजें रख देते हैं विच आर यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, बट बच्चे उनको यूज करना ही नहीं जानते हैं। बिकॉज आई हैव लर्न, बहुत सारे हॉस्पिटलों को अखबार में आता रहता है कि बहुत सारे लाखों रुपए का इक्विपमेंट वहां से उन्होंने खरीदा, पिछले 10 साल से वो पैक ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर्स को चलाना नहीं आता। आ गया वो EMI MRI की मशीन मंगा ली हमने, मशीन मंगाने के बाद में खराब हो गई, खराब होने के बाद में उसको रिपेयर ही नहीं करना आता, रिपेयर ही नहीं होती, रिपेयर के अंदर ही 4-5 साल लग जाते हैं। तो द स्टूडेंट्स, जो भी हम चीजें लाते हैं, जो भी सपोर्ट सिस्टम हम बनाते हैं, द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। उनको उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अवेलेबल, देन हाउ वी कैन यूज इट एंड हाउ वी कैन मेंटेन इट। मेंटेनेंस उसका कैसे करना है?
अडेप्टेशंस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मेरे जितने भी मित्रगण यहाँ सुनने वाले हैं सब बैठे हुए हैं। असेसिबिलिटी में सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए क्या मेरा घर असेसिबल है। हम डिमांड करते हैं ना कि वहां पे रैंप नहीं है, वहां पर ये नहीं है, वहां पर ये नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता। क्या हमने अपने घर के अंदर वेस्टर्न टॉयलेट लगवाया है? क्या हमने अपने घर में रेलिंग लगवाई है? भाई घर में भी तो उसको हम उठा करके थोड़ी रखते हैं, वहां भी तो उसको इंक्लूसिवनेस चाहिए ना, इंडिपेंडेंट चाहिए ना, वहां भी पर यूनिवर्सल डिजाइन होना चाहिए ना। तो हम घर से शुरू करें, देन घर से वो जब विद्यालय तक या कॉलेज तक जहां भी जाता है, क्या दैट वे भारतवर्ष में जो पेमेंट्स हैं जिनको हम पटरी कहते हैं, वो पटरियां असेसिबल नहीं है, दुकानें असेसिबल नहीं है, बैंक असेसिबल नहीं है, हॉस्पिटल्स असेसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक जगह आपको जाकर 2 या 3 स्टेप चढ़ने पड़ते हैं। पटरी जो बनी हुई है, आप 10 मीटर चलेंगे, उसके बाद में 1.5 फुट नीचे जाएंगे, 3 फुट आगे चलने के बाद में फिर 1.5 फुट ऊपर जाएंगे। तो असेसिबिलिटी फिजिकल असेसिबिलिटी है कि हम जहां से चले हैं और जहां तक जाना है वहां आसानी से पहुंच जाएं बिना किसी रुकावट के। दूसरा आता है जो करिकुलम है, जो पाठ्य सामग्री है, जो शिक्षण सामग्री है, जो टीचिंग एज एंड मटेरियल है, वो बच्चों को असेसिबल है या नहीं है, वहां पर हमारे को असेसिबिलिटी होनी चाहिए। देन जिन विधियों से हम पढ़ाते हैं, जो मैं ऊपर बात चुका हूं, जिन विधियों से हम पढ़ाते हैं वो असेसिबल होना चाहिए। लास्ट में बात जो है वो सेफ्टी की है कि हम जो भी करें वो बच्चों की सेफ्टी के लिए होना चाहिए, बच्चे उससे सेफ रहें, लाचार ना हो, मतलब उनसे उनको खतरा ना हो, उनसे नुकसान ना हो। सेफ्टी हमको उन बच्चों की जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मैंने एक वैसे छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था, बट कीपिंग इन माइंड द टाइम आई थॉट दैट मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए थे, वो मैं बोल दूंगा। तो अगर ये चीजें हम अपने ध्यान में रख सकते हैं, तो आई थिंक वी कैन अचीव हायर एजुकेशन गोल्स फॉर एनीबडी, including our children with disabilities. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. And as this is the valedictory session and Bhushan Punani sir is here, मैं एक बार स्पीच भूषण पुनानी सर से भी लेंगे, but I want to hear from one participant, anybody who wants, एक किसी ने तो बोला है बीच में, but officially anybody wants to say something about all 3 days, please, most welcome. I am opening your mic, allowing you to unmute yourself. Yeah, please. Who want to speak? I'm Gail Pereira, and I'm a special educator, and this is my first CRE. After a very, very long time, I was always frightened about the CRE because of the assignments and the long hours and, so much of talking. And then I have been in this field for the past 25 years. So for me, this was a very but this 3 days was wonderful. Your speakers were wonderful. The information that I got, I think I can write my own paper after the CRE. Oh, great. Okay, done. Anybody else? Madhukar? Sir. Good evening, sir. Yeah. Who? Yeah, please. I'm Dr. Geeta Challa from Hyderabad, sir. Yeah, please, ma'am. Basically, I'm a counseling psychologist and practicing since 25 years almost. And I have attended many CRE workshops and conferences. But this was the first workshop where the learning was 100% and the participation was. Thank you. Thank you, Alok sir. Thank you so much. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. I am Swaruparani. Yes. From AP, Krishna district. I am participating. First of all, thanks to Alok sir. I am a paper presenter. Okay. I am working in a government sector, special teacher in high school level. AP government conduct a special DSC. I am the district second in DSC 2009. Thanks for every teachers participate in this program. It's a wonderful CRE program.
Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. So, Hello. Yeah, please. Ji. Okay. In 3 days, we have first day we have talked about the inclusive higher education. उसको हम लोगों ने क्लियर किया कि क्या हमें सोचना चाहिए. द सेकेंड डे वाज द पैराडाइम शिफ्ट, हमारे सोच में कैसी परिवर्तन आनी चाहिए. एंड थर्ड डे आज जो भूषण पुनानी सर ने एक गिवन द ग्रेट प्लेटफॉर्म, ग्रेट एक वर्किंग नो हाउ वाला जो बात होती है, हाउ टू डू इट, हाउ टू गो अबाउट इट, जो थिंक कॉलेज के बारे में बात हम लोग करते हैं, हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, पूरी जो एक पिटारा था वो हमारे सामने खोल दिया है सर ने. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. We had 240 participants overall registered, and every time I have seen कि 200, 202, 204 लोग थे. और वो जो 40 participant हैं वो they were as a guest and they were as a other type of participant. And among this 240 participant we had 130 females. तो स्त्री शक्ति बहुत ज्यादा थी और इसलिए हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस रहा. सो थैंक यू ऑल द स्त्री शक्ति. एंड वी हैड 110 मेल्स एंड वी हैव द पार्टिसिपेशन फ्रॉम साउथ इंडिया. इट वाज 71 participants were from South India, 120 participants from North India, including we have included Gujarat and Madhya Pradesh, Gujarat and MP, Maharashtra here in North India. So it is becoming bigger. So 120, and we had participants from the Jammu and Kashmir. Two participants were there from. And from Delhi itself, it was 36 participants. So thank you all. I know you all are from the different sectors, from therapy, from the psychology, from the other things. It is well, हम लोगों को ये सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा कि क्या प्रोग्राम करना चाहिए, कैसे प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2 साल से थिंक कॉलेज पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. तो लोगों तक पहुंचने में, समझाने में बहुत समय लगता था कि हम कहना क्या चाहते हैं. बट आज जो ये दूसरा साल का जो अंतिम सेशन है, इसमें हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हाँ, कुछ जो हम लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं. वी कैन बी एबल टू सक्सेसफुल इन आवर थिंक कॉलेज मूवमेंट, कि हम हमारे जो स्टूडेंट विद खास करके इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाए. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया. All the recorded things are on website of Manovikas, on the Facebook of Manovikas, on the YouTube of the Manovikas. You will find out, you will search it, you will get it. And most of the things we have updated on the website. जहां तक सवाल है कि 1-2 प्रेजेंटेशन हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, वो हम लोग अपडेट कर देंगे. हम आपका सर्टिफिकेट, लेट मी वेरीफाई एज पर द RCI नॉर्म्स कि आपके कितने घंटे, कितने मार्क्स हैं. देन वी विल प्रोवाइड यू डेफिनेटली द वन प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम Manovikas, and then the original certificate you will get it from CRE certificate from RCI itself. And I know you can all be with us, be in touch. We have the different programs of Manovikas. Mashwara Aman Bhavan तो मैंने बोला, और भी बहुत सारे programs होते हैं. So keep in touch. And now I'll go for the final remarks from Punani sir. Any blessings as a guest, chief guest of the session? Yeah, sir. Actually, it's a matter of great honor. मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका जो थिंक कॉलेज का मूवमेंट है उसके अंतिम क्षणों में ज्वाइन करने का अवसर मिला. I feel blessed. I'm part of this great big gentry of more than 200 people. मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप किसी भी विकलांगता पर मत देखिए. Don't look at their disability. Don't look at their limitation. Look at their potential. Is our mental status, our own thinking, our own way of thinking, which is very important. The moment we start looking at the abilities or how to enhance the abilities, things will totally change. We always talk of disability, but within disability, we should start thinking of the abilities. That's number one. Number two, after listening to Gupta sir and all other people saw the schedule, one thing which is very important in our country is the advocacy. When Alfonso Madam was making a presentation, we talk of equality, we talk of equity, but this all has to be in the परिप्रेक्ष्य of social justice. क्योंकि हमारा जो सामाजिक न्याय है, क्योंकि हमारा देश, हम बहुत ही, हमारा सौभाग्य है
We have the laws, we have the guidelines, we have the judgments, we have the notifications, which are very useful. We are one of the most advanced country as per the legal base is concerned. But unfortunately, we don't use law as a tool. We don't use law as a tool. मैंने पहले जिक्र किया था, even government denied that intellectually and the development disabilities cannot go beyond 7 standard. They have no business to decide like that because the law says, the constitution says, our संविधान says कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है. वो ये नहीं कहता है कि किस बच्चे का किसको नहीं है. हर एक बच्चे को अधिकार है. We have to go by that. When we come to शिक्षा, it's the all levels of शिक्षा. And my request is, there are a lot of very bold judgments. There are a lot of very bold notifications. Please, for God's sake, go through those. Use them as a tool. That's number 1. Number 3, very important. While there are very successful cases of inclusion, education, employment, self-employment, but the number is very small. 90% of children with disabilities have no access to any type of services, and they need access. और उनको यदि आपको एक्सेस देना है तो दे नीड लॉट ऑफ अवेयरनेस. ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि कार्य क्षेत्र नहीं है. समस्या है कि इन योजनाओं की जानकारी नहीं है. पीपल आर नॉट अवेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग. मेरी आपसे गुजारिश है, wherever you are in South India, North India, any part of the country, kindly make it a principle to reach new people, to reach the people who are not aware, who are not sensitized, who don't get the benefits. Like, for example, we are struggling with UDID. Every child should have a UDID, universal identification, but they don't have. Still, we don't have 80% children who do not have the certificate even. So my request is, your qualification, your profession, your experience will be justified if you cover more and more people with all type of disabilities. 4th and very important, there's a lot of good literature, there's a lot of material available, there's a wealth of knowledge available. Kindly try to refer to that and kindly try to update your knowledge. For example, given a classic example, technology has made a big difference, it's going to make a big difference. But technology will make a difference if our teachers are aware, if our parents are aware, if our administrators are aware. Kindly use the technology, latest knowledge. And I'm very glad Mano Vikas took the bold initiative of talking of college education, in college, which is a very, very bold initiative. And we all should support wherever we are. We should see that our children, our students go to all levels of education. They are empowered, they are informed, they are motivated, they are counseled, and their families are informed, families are motivated. Once we take a collective approach of taking the family and the students together, and also the environment, the education fraternity, the colleges, the university, the school, the Sarv Shiksha Abhiyan, there's now Samagra Shiksha, all that has to go as a package. We have to hit upon everything. And I believe in, as I mentioned again, a lot of advocacy. I'm talking positive advocacy. There are a lot of people in the government system who are well-meaning, but they're not aware. There are a lot of laws which are there, but they are not being implemented. So friends, my request to you is, I urge you, I request you with the folded hand, if you want to see the bright future of our children, our students and their families, use the law, use the schemes, use the notification, use the information, use the knowledge, use the technology, use the whole gamut of development system to make them inclusive, to give them their rights, to give them their opportunities, to see that they are like anybody else. And I conclude by one remark: look at their abilities, look at their potential, motivate them, use the other people as role model to convince them, show them small films, show them small videos, show them some information that will change the whole scenario. I'm very happy things are happening in our country. Our government is very positive for the time being. There are a lot of very good initiatives, Accessible India campaign, ADIP scheme, and Samagra Shiksha, college level education, Rights of Persons with Disability Act, National Policy on Education, Right to Education Act. And last, I request all of you to read 3 documents you must read. You must have it on your table. Right to Education Act, Rights of Persons with Disabilities Act, and New Policy on Education. If you are not able to get any of these documents in your language, please let us know. Mano Vikas, we shall be very happy to provide. Once you go through these 3 documents, you will realize that
what more has to be done with these children, and it will change your own thinking, your own style of working, your own level of knowledge. And if you do that, I think this Manovikas hard work of 3 days will be a great success if more children, more parents are reached for giving them more meaningful training, opportunities, inclusion, development, and their overall comprehensive development, so they emerge as a good citizen, a contributory citizen. If that happens, Alokji, your hard work will bring fruits if we cover more people in the best possible way. Definitely, I bless all the participants. I congratulate all the award winners, and I'm sure people who didn't get the award, they also got the award of making a presentation in such an important seminar and webinar. And next time they will also get the award. Our award is our satisfaction. I was seeing a lot of good comments from the participants. That shows, Alokji, how much hard work your team has put in. I congratulate everybody at Manovikas for making this program a grand success. Wish you good luck and wish you safety in the COVID time. Be safe, be healthy, and be useful to humanity. God bless you. Thank you, sir. A big thanks to Punani sir for putting the center part of the this 3 days presentation. You have given all the gist of the 3 days presentation, and with your blessings, with your ideas, we will be in touch. Definitely, हमें लगता है कि आने वाले समय में Think College program जो है, we will able to see the many more students in the colleges and university. So that will be our main goal. Yeah, thank you, sir. सर मैं यहाँ पर एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि भूषण जी ने ना बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे को दिखाई। अगर उन सक्सेस स्टोरीज को, उनकी जो बायोग्राफी है वो हम लिख करके पब्लिश कर दें एंड वी पब्लिसाइज इट, आपके यहाँ से भी जो निकलते हैं उनकी बायोग्राफी, ये पैदा हुआ था, असेसमेंट हुआ, इसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ, ये एजुकेशन ली, उसमें ये इनको दिखते आई, हमने ऐसे दूर किया और आज यहाँ पर हैं ये। इफ यू कैन पब्लिश दोज, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है दूसरे पेरेंट्स के लिए कि दे कैन आल्सो डू इट। तो सक्सेस स्टोरीज को पब्लिश करना मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा काम रहेगा। इफ यू कैन डू दैट, ग्रेट। एंड in our inaugural session, Stuti Kakkar ma'am, she has given us the way and she has voluntarily said कि इस बार जो डॉक्यूमेंटेशन है इस पूरे प्रोग्राम का और आने वाले जो भी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर टू कॉलेज तक कैसे लोग पहुंच सकते हैं, इसमें बहुत सारे केस स्टडीज के बाद जो बात आप कहे कि सक्सेसफुल स्टोरीज की बात कहे, सो मे बी भूषण पुनानी सर से हम लोग फिर थोड़ा सा हेल्प लेंगे एंड देन वी विल पब्लिश डेफिनेटली। Yeah, so for the formal vote of thanks, I would like to request Sangeeta ma'am, please give the formal vote of thanks, please. Sure, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड सबको प्यार भरा नमस्कार। जो 3 दिन आप सभी हमारे साथ रहे, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एक्सपर्ट, जो हम नेशनल वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और थिंक कॉलेज का जो ये मूवमेंट लेके चल रहे हैं, तो आप सभी के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। और मनोविकास टीम की पूरी कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा चीज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करें। और सबसे पहले मैं स्तुति मैम को, देसाई सर को, पुनानी सर को, जयंती पुजारी मैम को और हमारे जितने भी एक्सपर्ट, संजय कांत सर, हेमलता मैम, आलोका गुहा मैम, रोमा कुमार मैम, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर मौसमी मैम, सभी एक्सपर्ट्स को और जितने भी हमारे प्रेजेंटर रहे, चाहे वो पोस्टर प्रेजेंटेशन हो या पेपर प्रेजेंटेशन, सभी को हार्टली थैंक्स मनोविकास फैमिली की तरफ से। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे से 3 दिन हमारे साथ रहे और बहुत अच्छे से आप चला गया उनका, Sound has gone, sound चला गया। आई थिंक साउंड सम लीड कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अभी है प्रॉब्लम, बट आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा। बात कर रहे थे कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग बढ़ाते जाएं, यही हम सभी की कोशिश रहेगी। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच। सभी लोग सेफ रहें, अपना ध्यान रखें।
Thank you so much. Thank you Bhushan Punani sir, thank you Gupta sir, and thank you all. So we will be in touch. हम लोग जल्दी मिलेंगे. So thank you all. शुभ रात्रि, शब्बा खैर. Thank you sir. Thank you.